What's good, Desi Hip Hop fam? You are tuned in to the Unfiltered podcast live on YouTube, Twitch, and Facebook. And we also post episodes on Spotify, Apple Music, and everywhere else, man. I am your host, DJ Raf, live and direct from the US. And today we're hanging out with these guys, Khatarnaak Hip Hop Collective, live from Delhi. Please welcome Khatarnaak to the show. Hey. What up? What up? What up? What up? Yeah. Oh man, What's up? a lot of people in this crew, bro. Yeah. Right here we have Sanjay, Jinn, and Shan Krozy, Yeah. Sushanto, Too many Cecilia, people. 5 windows not enough. and still one more guy is supposed to join. New material. So Yeah, it's a G much easier. okay, man, happy to have you guys here, man. Today, let's see. Let's start with Sanjay, bro. Sanjay, how are Yo, you? How was your quarantine? How was your year? How is your 2020? Tell us a little bit. it's quite dope. I mean, इसी ईयर पे अपन लोगों ने खास से खतरनाक ड्रॉप करी, मतलब म्यूजिक भी बना और काफी काफी चीजें खराब भी हुई, which is like we can't perform live at the venue. तो ये सब खराब हुआ, but बाकी सब मस्त है, समझ रहे हो? Yeah, makes sense. Okay, now let's see. I think Jin and Shan, Jin, bro, yeah. you have some like audio, man. I can hear other people. Who is this guy with the? Somebody has like some audio coming, right? Maybe it's Sanjay, bro. Yeah, There Sanjay, are I think two, there Sanjay. are three Man. people. There are three people who are outside. I guess so it must be Yeah, coming from Like, their end. Okay. I'm at a cafe. Oh, okay. No, now it's Sorry. yeah. Stay away मतलब from मैं people, man. Yeah. या bro, You're मैं good. जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो कोई बंदा ना बंदे की जात like nobody is there. Ravi Sharma, Ravi Sharma is saying you are fire. Thank you so Yeah. much, bro. Yes, Ravi Sharma is saying Thank that. you. Lots of comments we're already getting, man. Black Ravi Sharma says Khase Khatarnaak. Black Saab says love from Khalistan. Who? Yeah. Kavita, Respect. hell yeah, man. Okay, Jin, bro, tell me, Yeah. man, about your year 2020. How has it been going, bro? 2020. 2020 is like bro बहुत ही ज्यादा बेकार and 2020 is suck bro suck. This is something what I don't want in my life. 2020 निकालो इसे, ये बहुत ही बेकार था. But yeah, hoping for the best कि next year थोड़ा अच्छी चीजें लाए, bring some good vibes और ये सारी जितनी भी ये भसड़ हैं खत्म हो और जितनी भी ये shit चल रही है all over the world ये भी जल्दी से end up हो इसका. And I'm praying कि जल्दी ठीक हो जाए और सब लोग ऐसे विंडो में ना बैठ के आपस में बात करें. Yeah, man. 100%, bro. Yeah, we Yep. can't wait, man. Almost Yeah. 2021. Almost time. Yeah. Sushanto, bro, tell me Yeah, man. about your year. 2020 का starting तो बहुत अच्छा था. I guess till Feb second week we performed and we made music. But afterward that March के 23rd से यहाँ पे quarantine start हो गया था and कुछ सरकारी नियम थे and people like everything was shut. So yeah, it was kind of tough for us to had kind of mental health problems, but in fact we dealt with it and we're still here, giving the interview and doing great, I guess. So it's kind of blessing. It's kind of blessing for each and every one of us who are here and making big here, right? Flash Right, bro. We got D in the house, man. G materials. Yo, DPL. Face reveal part 2. Okay. Bye. दिखाइयो डी का फेस दिखाइयो पूरा फाइनली फेस डी का. Also, bro, Shan Krozy. Yo Missed bro, you. what's up? How's your 2020, man? How have you been? It's good and bad both. Okay, मतलब what जैसे was भाई the ने good? कहा था
लाइक सुशांत भाई ने कहा था कि फेब मार्च तक थोड़ा अच्छा था, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुई। लाइक शोज नहीं मिल रहे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हाँ, बट अब वापस थोड़ा थोड़ा करके सही हो रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है। हाँ। एंड व्हाट वाज द गुड पार्ट? व्हाट वाज द गुड पार्ट? सीख मिला घर पे रह के, बहुत चीजें मतलब रह के ना, चीजें नॉलेज लिया, चीजें देख के कि हाँ टाइम अपने आप मतलब अपने साथ खुद को मैंने टाइम स्पेंड करा, खुद के साथ, खुद को जाना कि ये क्या है घर पे रह के। और बस धीरे धीरे पता चला, एंड ये अब चल रहा है, देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है। Hope for the best. Yeah, man. That's right. Okay, perfect, man. Tell me, Cecilia, what was your year like, man? How? Pretty much lazy. Always. अभी भी सो के उठी है वो। No, अभी सो के नहीं उठी मैं। Yeah, but yeah, it has been a sad year. Like I wanted to work on my album, but I couldn't. Yeah, and being apart from all the gigs and performing and chilling with my boys. Yeah, it's been pretty sad, but since things are getting, I mean, better, I guess. I hope it gets better again. Yeah, it's almost there, man. It's coming. Vaccines are coming. Everything will change, I'm sure. D Materials, man. I think he's on mute. But let me see. D Materials, how was your year, bro? Everything is fine and nice. Everything is fine. Okay, tell me, how many beats did you make this year? This year I made a lot of beats this year, but better than when I started. I started doing trap music, and then I met Khatarnaak thru, and they asked me to create old school and boom bap beats. So I learned a lot after meeting them. So it's like nice. Hell yeah, bro. Yeah, bro. That's sick. Well, cool, man. Glad to have you guys here, man. First question I have for you guys is, tell me the story of Khatarnaak crew. Who wants to tell me the story? Sanjay. Let's go, Sanjay. Let's hear it, man. Let's hear the story of how you guys got started. तो 2016 में अपन लोगों ने स्टार्ट करा ये। तो मेरा ब्रेकअप हुआ मेरे एक्स क्रू से। कैन यू हियर मी? हेलो? Yeah, go on. Yeah. तो 2015 में मेरा जो एक्स क्रू था वो मेरा टूटा था। तो कुछ सीन सही से नहीं चल पा रहा था उन लोगों के साथ। तो उधर मैंने काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज थी मेरे अराउंड में। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इससे डील नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी उस वक्त। तो 2016 में जिन मेरे को बहुत पहले से जानता है, जिन और मैं एक दूसरे को बहुत पहले जानते हैं, एंड नानू और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो अपन लोग ना मतलब कर रहे थे अपने क्राफ्ट पे अपने आप को बना रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिस चल रही थी। इट्स लाइक 2016 में जब मैं अकेला कर रहा था, देन I started hanging out with Jinn। और मैंने उसको बोला कि ब्रो ऐसा सीन है, अभी मैं अकेला हूँ, तो लेट्स जस्ट डू समथिंग टुगेदर, है ना। तो ऐसा सीन बना। उसके बाद ट्रैक बनाया। उसके बाद फिर नानू को मैं बहुत पहले जानता था, ठीक है। तो जो पहले मेरा एक्स क्रू का जो मोटिव था क्रू का वो था कि वही to spread hip hop, to spread the real sound of hip hop, समझ रहे हो। तो ऐसा सीन था। एंड तो फिर जब वो ब्रेकअप तो हो ही गया था मेरा क्रू के साथ। उसके बाद फिर जब 2016 में मैं जिन को मिला, एंड देन फिर सुशांतो, तो मेरे दिमाग में आया क्योंकि मेरा एम वही है, मिशन वही है, टू स्प्रेड हिप हॉप, समझ रहे हो। तो हिप हॉप को फैलाने का है, और वही सीन चल रहा था कि मतलब क्रू बनाते हैं, एंड देन वी गॉट ब्रेकर्स इन इट, वी गॉट 4 or 5 ब्रेकर्स
अपने पास सुशांतो है जो पॉपिंग भी करता है, you know, and then there are 5 MCs, you know, there are 5 MCs and अपना डी भाई भी हमें 2017 I guess, no 17, 18 oh yeah 2018 2018 सॉरी मैं थोड़ा भूल जाता हूँ या तो यस तो मतलब यही था, इसी तरीके से अपन लोग मिले एंड देन फिर सीसी बीच में मेरे पास स्टार्ट हुई थी आना, 2016 ही था वो भी मेरे ख्याल से ना 16 एंड 16 17 था। यस तो सीसी से भी उसी टाइम पे मिला, वो वोकलिस्ट थी, देन आई क्या कहते हैं उसको, मैंने बोला कि चलो भाई लगते हैं काम पर, कुछ करते हैं साथ में, तो यस दैट्स हाउ इट स्टार्टेड खतरनाक। Nice. Hell yeah, man. That's amazing. Cece, I want to hear your story, how you met these guys, and tell me what happened. So back when I was in school, I had this Facebook friend of mine who was the cousin brother of Sanjay Bhaiya's, and since I was still in school, and he wanted to do a song with me, and he had like told me a couple of times, "Hey, let's make something." और आ जाओ कभी स्टूडियो में, और फिर मैं and I had like pretty strict family, so I was like, let's just wait till I get to college so I can like have some free time to come over and all. And in 2016 I joined college, and after 2 months of it I decided to visit the studio, and that's where I met Sanjay Bhaiya. Yeah, and that's where I got introduced to his music and Desi Hip Hop. So that was like the first time I was listening to these like music. And after a while, I just got randomly added into a WhatsApp group, which जिसका ग्रुप का नाम था सिर्फ काम की बात, and like संजय भैया है, and the other members, I didn't even know them back then. I'm like, why am I in this group? and then and then I'm like told later on, "Oh, we have formed a crew, you're a part of it." Nice. Yes, and then I actually with them more and got fascinated by that, by what they do, and I also started kind of rapping after a little while. Started like doing tried. Nice. I like that. Oh, all right, cool. In this show, Unfiltered Podcast, we have many segments. We play some games, and with these games, we get to know each other better. Okay, so we'll start with the first segment of the show called Scavenger Hunt. Scavenger Hunt. So Scavenger Hunt, man, in this segment, we ask you guys, like I ask you guys to share something from your room, something from your house, just something to share a story with the audience, man. I know some of you guys are ready with it, so let's start with Sushanto, man. Tell me, Sushanto. All right. Tell me a story. You can see this Khatarnaak chain, you can see this durag, right? So this chain is very much important to me because I hold this as like what to say, as a blessing that I'm in this crew. And इस चेन को पाने के लिए जो हमने स्ट्रगल करी है ना, वो हमें ही पता है, हम चारों को, स्पेशली संजय को, जिन भाई को, शान को, मेरे को, बिकॉज हम जिससे बना ये जब बन रहा था, ये प्रोसेस ये जब बन रहा था, हमको पता नहीं था. I thought the guy must be a frauder because he took my order, he took all the money, but eventually that guy was like unable to receive my call. He was not even replying my text. And suddenly I just surpassed and I gave it to Jinn bhai. Jinn bhai, कुछ करो यार, ये बंदा कुछ respond ही नहीं कर रहा. And then Jinn bhai has this kind of tendency when he start talking to individuals, he become kind of very very familiar and frank to them. So उसने जैसे तैसे करके पट्टी पड़ा के कुछ ना कुछ करके वो निकाला सामान उनसे. And afterward all the hustle, we got this. I guess we ordered this and while we were actually shooting Chilinwala Scene 4, we ordered this back then and we received it on after Chilinwala Scene 4. Yes, after exactly. Chilinwala Scene 6. Yes, after 3 months we got this.
So it holds kind of Yes. special place to my heart, and everywhere I go, especially in an interview or probably in this kind of podcast, I usually bring this with me because it brings a lot of luck to me. Plus, this chain has been given by my mom. It's been given very recently, and this durag has been made from very special friend of mine who's very much familiar with fabrics and clothing. So she kind of style wise. She makes my durags and a lot of different aspect in the style for hip hop wearing stuffs. So yes, these things are something like I usually wear day to day life. Yeah, Nice, so this is kind of special to me. nice, man. Thank you for sharing, bro. That's awesome. Appreciate it, man. Sanjay, do you have something Yo, to share? I don't know. I'm like, Okay, you tell me. You tell me what you wanna know. I mean, okay, okay. I'll come back to you then. I'll think about something. yeah. That's dope. Uh, Yeah. Cece, do you have a story to tell us about something? Okay, I was thinking of something else, but I've already told that one. So I have this. So Uh-huh. this is my mic stand when I Oh. yeah, I don't know pretty much how to record at home, but I made this from a bottle. I made this from a water bottle. Oh, Wow. I do yes, I like making like doing it, nice. especially when it's something that I love doing. So I don't know how to paint, but I just tried whatever. The only things I can paint is like these moonlight thing, and yeah, I did these. Yeah, that's nice. Nice. That's, using your skills to make something interesting. That's awesome. Really cool. Jinn, bro, do you have a story to tell, man? Yeah, story like अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है. Oh, Yeah, they wait one they second. Wow. Yeah, they gone. Yeah. They came back. Yeah. तो yeah. अभी आवाज आ रही है मेरी. Huh. तो Perfect. लाइक मेरे पास है डी मटेरियल बिकॉज क्योंकि डी मटेरियल एक ऐसा बंदा है. आज हम इसे फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे होंगे, वरना ये हमारे लिए लाइक अनोमनस, ये हमारे लिए अनोमनस है. कभी दिखाई नहीं देता ये, और पीछे से बैक हैंड काम करता है. मैंने पहली बार इसका फेस देखा. मैंने पहली बार मैंने डी भी- का फेस देखा. मॉम स्वेयर. यस यस बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक रहता था भाई. या बिकॉज मैं मानता हूँ कि ये किलविश का फैन है, बट डजंट मैटर ब्रो. ये हम इसके साथ कब से काम कर रहे हैं, और लाइक हम 2 बार मुंबई भी हो आए शो करके, बट ये बंदा कभी बारिश हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, एंड ऑल दिस शिट. ये नहीं आता. ये नहीं सब आ आता. जाते हैं. तो लाइक बहुत बहुत प्यारी मेमोरीज है हमारे साथ. बीट मतलब इतनी डोप बनाई है, और कभी ऐसा फील ही नहीं करने दिया कि बंदा मुंबई में रहता ही नहीं है. इट्स लाइक कि बगल में ही रहता है और साथ में मिलके काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही सही चीज है. तो ये चीज बहुत अच्छी बनाती है. आई थिंक ये कोरोना से पहले हम अपने आप को ऐसा स्टैंड कर लिया कि हाँ, कोरोना आए ना आए, हम लोग ऐसे काम कर भी सकते हैं. Yeah. Nice. That makes sense, bro. I'm glad D Materials you joined us, man. Yeah, bro. We're gonna get some things out of you, bro. But before that, Shan Krozy, bro, you want to tell us? bro. Right now I'm in the park. बोले तो हिंदी में पार्क. तो यहाँ पे बैठे हुए हम लोग घर पे नहीं है, क्योंकि हम दोनों को एक स्क्रीन मारना था, ऐसा बोला गया था. तो फिर मैं घर से यहाँ पे आ गया, जिन भाई के हवेली में, जो बहुत खतरनाक है. वहाँ पे जाके मैंने कुछ नहीं करा. सबका वेट कर रहे थे कि कैसे कब क्या करना है. और एक क्वेश्चन हमें बहुत सता रहा था जब आपने एक मैसेज अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉप करा था. क्या आइटम हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे. आइटम लेकर आना, तो आइटम हम लोग हिंदी में बोलते लड़की. तो बोले कि अपनी अपनी आइटम लिया है क्या. तो वो तो हो नहीं पाया, तो हम आ गए. CC is like CC is like that. Sushanto is like that. Sanjay is like that. फैन है वो तो यार. That's offensive, bro. All of us. yeah, that All of was us are like, lame, nope, bro. nope. सीसी आइटम सीसी आइटम. घुसा मारूंगी ब्रो यहीं पे चिल कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं. या फीलिंग गुड. That's awesome, man. You're getting some comments, man. UK Rappy Boy. Shout out to you, man. Khatarnaak Bhai Log. And somebody said Cecilia is such a
cutie. No, Prashant Sharma UK. says, "Are CC?" हमें क्यों नहीं दिख रहा? UK love you bro. UK dope UK love you producer, so much, dope bro. rapper. All right, हमारा man. ब्रूनो, हमारा पहाड़ी ब्रूनो मार्स. हमारा पहाड़ी Bruno Mars. Yes. पहाड़ी Bruno Mars. D materials, man. Your turn. Let's hear a Yeah, story. क्या एक्चुअली करना क्या है? This guy is dope. You know, this guy is dope. Basically, the question Oh, is, can you no. share a story about something? What the fuck, dude? Share something from your room and tell us a story about it. Yeah. Shit. How about this? I'll tell you. Story. Tell me the story of how you make beats. How I make beats. You have instruments. You use keyboard. What do you use? Laptop. What is it? I use my laptop actually. So before laptop, I used to Oh, shit. produce beats on my cell phone. That I produced for first track with Khatarnaak Hip Hop. The track called Chilling Wala Sintu. I produced that beat on my cell phone, and the other track is Chal Chuti Hai. That this track that also I produced on my cell phone. After that, I left the job and started doing music. Then I bought the laptop. Bro, man, Yeah. Yes. how do you make beats on a cell phone, man? The application called Caustic 3. Oh shit. So we can load sound fonts. So that's actually a good application than other production apps available on a cell phone. Man, So Chal Chuti became like viral. You know what I mean? Like, Yeah. it's one of the highest streamed, Khatarnaak songs. Khatarnaak. Like Yeah. highest stream on Spotify, YouTube. It was just viral. It was just spreading. Like I remember this time. It was just it was just getting views. It was just keep increasing. And you made the beat on a phone. That's Yes, that beat I produce on my cell phone. So actually, I was on my work. I was on job. I was traveling via bus. So while traveling, I made the raw version of that beat and sent it to Jinn. So like within a week, they send me the raw recording. So I tell Jinn that I will make some minor changes and send it to you again. So I replace all the drums and made the beat even more like harder, more harder. Yeah, baby. nice. That was the turning point. Actually, that was the turning point That's of. nice. That's a good story, man. That's amazing, man. Thanks for sharing, bro. I like that. We're gonna move to the next segment of the show, man. And this one is called social undistancing. Social undistancing. Undistancing. So social undistancing, in this world we all social distance, but in this segment I want to get to know you even better. So we gotta get closer. So we can ask each other questions. In this segment, I want us to ask questions to each other. I will ask you question, but also, if Sanjay has a question for Jinn, you can ask that. Jinn wants to ask a question to Sushanto, you can ask that. This is a segment we all get get closer to each other. So let me start by asking Sanjay. Um, tell me the story. Okay, actually, this is a question for everyone, but whoever wants to answer can answer. Tell me the story of Chillin' Wala scene, because it's been going on. You're in number 5 now, right? Number Yeah. 5 is the latest. Tell me, like, tell me why you do it, and what's the inspiration. Tell me the story of Chillin' Wala scene. So, should I? May I? Go ahead. Yeah. Yeah, go for it, bro. तो लाइक ऐसे ही कुछ बीट बनाया था लाइक मेरे पास एक बीट पड़ा था आई प्रोड्यूस्ड अ बीट एंड देन उस पर मैं वाइब कर रहा था एंड आई गेस तो हाँ जिनके साथ मेरा एक ट्रैक था विच कौन सा था वो
कोई सॉन्ग था जिन के साथ मेरा, तो वो हम किसी वजह से रिलीज नहीं कर पाए थे, एंड देन वो कैंसिल हुआ, मतलब कैंसिल नहीं हुआ, वो रिलीज नहीं हो पा रहा था। मैं बिजी था, वो बिजी था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही मैं स्टूडियो में बैठ के बीट बना रहा था, दैट वाज लाइक इंडियन सैंपल बीट नो। तो बीट बना रहा था, उस पे फिर मैंने करा, एंड तब तक खतरनाक भी बन चुका था, है ना। तो उस पे मैंने अपना वही वाला वर्स करा जो मेरा जिन के साथ गाने पे था, जिन इफ यू रिमेम्बर द सॉन्ग। या मैंने भी वही किया था। हाँ, तो हम दोनों ने अपने वो वाले वर्स डाले, एंड देन फिर ऐसे चिल करते करते, लाइक मतलब हम लोग चिल ही कर रहे थे, तो बीट बना रहा था और फिर उस पर रिकॉर्ड करा, ऐसे ही सिर्फ सुन रहे थे। तो देन आई केम अप विद दिस आइडिया कि भाई ऐसा चिलन वाला सीन, मतलब ऐसे ये तो चिलन वाला सीन चल रहा है ना, मतलब ऐसे ही बन रहा है कुछ, एंड देन हम स्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा ऐसा थीम या फिर ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि कोई गाना बनाना है। तो इट स्टार्टेड लाइक दैट ओनली, के क्या कहते हैं, चिल कर रहे हैं, लेट्स कॉल इट चिलन वाला सीन। देन फिर सारे खतरनाक के मेंबर आए इस पे, एंड वो बाहर आ गया, मतलब फर्स्ट वाला जो था ना, इस तरीके से स्टार्ट हुआ चिलन वाला सीन, एंड नाउ now we are on fire. Nice, man. yeah. That's awesome. Okay, so like I was saying, in this segment, we ask each other questions. So anybody else want to ask Sanjay a question? Now's your time. Jin, do you have a question for Sanjay? चिलिन वाला 6 की बीट कब बनाएगा तू? Nice question. Good Let's see, bro. D Matt is with me. So let's just do something, है ना? And we got DJ Yuri on that too, on the scratch, on the hook. Yes. So, Nice. Yes, let's see what's up, man. आप Sick, भी man. साथ ही हो. Sushanto, do you have a question for Sanjay, or Shan Krozy? You got a question for Sanjay? I have a question for D Material. Okay. Okay, yeah, you can ask your question. Yeah, D go ahead. Material भाई beats दे दो यार, कुछ हमको भी मौका दे दो रैप करने के लिए यार भाई। सब एक ही जगह पे जा रहा है भाई, हमको हमारे लिए भी कुछ बना दो भाई, हमारे भी थोड़ी कृपा बरसा दो यार। Always bro, anytime. लाइक मैं संजय भाई को भेज देता हूँ, मतलब बीट सारी, मतलब फिर वो बीट घुमा देते, मतलब जिन भाई को, शेन भाई भाई को, मेरे सबको पास घुमा देते नहीं आता भाई, इस भ्रम में बैठा हूँ, यहाँ से मैं करेक्ट करूँगा। नहीं ब्रो यार, ऐसा मत बोल, फिर ऐसा मत बोल यार, फिर इन्हें लगेगा कि मैं भेजता नहीं हूँ। Sick, bro. This brings me to, man, I have a question for Sushanto, bro. Yes. Do you like speaking more in Bangla or Hindi or English? Which one is your? Like if I say you honestly, I'm born in Calcutta, completed my school and higher studies in Delhi, went to Bengali college, all right, then afterward completed my college from a Muslim college, and then afterward I went to a Christian college. So yeah, so it's just like a multilingualistic way. So basically I can speak Bengali, I can write Bengali. In fact, I've graduated in Bengali honors from Zakir Hussain Delhi College, from Delhi University. So yes, so in a way it's kind of, I can speak 3 of them very fluently. Nice. Yeah, I did not know this about you, so that's really man. interesting. All right, man. Does anybody have a question for Sushanto, man? Jin, you want to ask him a question? I'm excited. मेरे पास है। Okay, Sanjay, ask your question. तो भाई आप लाइक पतले कब हो जाओगे? Don't take it in an offensive way. Nice question. Actually सीन क्या है ना, क्वारंटाइन के चक्कर में जितना एक्सरसाइज होता है उससे डबल मैं खा लेता हूँ, क्योंकि घर पे रहता हूँ। अभी जैसे नॉर्मली बाहर होता हूँ तो इतना मुंह चलता नहीं है। So what happened when I usually run 2 hours a day straight. I hit 21 kilometers a day while I run. Okay, but what happened? The more I burn, I triple eat. So it just like recover or reimburse, it's within. So जल्दी हो जाएगा. You'll get to see it real sooner, bro. अच्छा, वैसे मेरा क्वेश्चन I have one more question for CC. Yes, go ahead. CC हमें EP या एल्बम कब सुनने को मिलेगी?
next year. Yeah. Very nice Well, wish. next year is 1 month away, so I mean, be ready. okay, give me like 4 or 5 months. ओके Like ऐसा क्या मेरा एक क्वेश्चन था सुशांतो से। सुशांतो, आप जो भागते हो, हाँ जी, आप वो एप्लीकेशन पे भागते हो सच में? सच में भागता हूँ ब्रो। एप्लीकेशन भी आपको तभी नाइस नाइस एप्लीकेशन भी आपको तभी स्टैट्स देगा जब आप भागोगे, क्योंकि उसमें पेडोमीटर नाम का नहीं, एक वो उसमें होता है। एडिट नहीं, मैं वो बता भी रहा हूँ, तो हो लेट मी सकता है। फिनिश, लेट मी फिनिश। उसमें लाइक अगर पेडोमीटर तू नाम का ऊबर एक बाइक में बैठ के भी तो ऑन कर सकता है। नहीं, ऊबर बाइक में बैठ के सिर्फ वो फिर जा सकता हूँ ना, दौड़ने का स्टैट्स तो आएगा ही नहीं आपके पास ना, वो भी तो देखो। डी से पूछो यार देख, कुछ सही कोई है अच्छा यार। सा हाँ यार, डी से पूछो यार, अरे हाँ, आया सिस्टम डी। भी है यहाँ पे। मेरे को एक क्वेश्चन है डी से। Uh-huh. भाई तू बोलता क्यों नहीं है? डी देखो अभी भी नहीं बोल सम रहा। सम बहुत सीरियस बहुत सीरियस सीरियस है डी, क्वेश्चन अपनी लाइफ में बहुत सीरियस है डी। नो नो नो, सीरियस जैसा नहीं ब्रो, मतलब लाइक मैं बहुत एक्चुअली हरामी। मतलब कम ही बोलता हूँ मैं। अच्छा, नहीं वैसा सीन नहीं ब्रो। नहीं सही है। वैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर डी के अगर एल्बम देखेंगे ना पूरी, तो एक दो ही फोटो मिलेगी शायद उसकी। हाँ। फोटो भी कम। मेरे फोन में एक भी नहीं दे दो ब्रो, भाई। मेरे फोन में एक भी नहीं। नहीं सही है, होता है ऐसा। अच्छा डी मैं एक क्वेश्चन कहाँ गया डी हाँ यही पे ब्रो। ऊपर आ गया। ओके ओके शाम तो हट गया क्या? तो मैं ये पूछ रहा था कि अभी क्या प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में आपकी? ब्रो लाइक अभी मतलब आपके साथ तो मतलब एक ईपी कर रहा हूँ, एक और जो मेरे अलावा? ईपी आ रही है अपनी। हाँ, आपके अलावा मतलब काफी ट्रैक्स मतलब कर लिए थे मैंने, लाइक प्रीवियस 2 मंथ्स में मतलब काफी ट्रैक कर लिए थे मैंने, बहुत सारे सोलो कर लिए थे मैंने। मतलब क्या क्या सीन है, किस किस के साथ है, हमें कुछ बता सकते हो? Huh. Good question. बिल्कुल ही होस्ट वाली फीलिंग आ रही है मुझे। हाँ डी बाबा। हाँ ब्रो। हाँ मतलब क्या क्या किस किस के साथ क्या क्या बन रहा है, कुछ बताओ कुछ। एक्चुअली मतलब मैं मतलब दिल्ली का एक क्रू है, 8 जिला रिकॉर्ड्स, मतलब आपको शायद पता होगा, 8 जिला रिकॉर्ड्स एक्चुअली। हाँ, तो उनके साथ मतलब काम कर रहा हूँ मैं, जो मतलब लाइक आई मेड लाइक 7 to 8 ट्रैक्स फॉर देम, लाइक जो अभी रिलीज होने वाले काफी अच्छे ट्रैक्स है लाइक। और मतलब लाइक उनके अलावा मैंने अभी काम किया था देहरादून के आर्टिस्ट के साथ, काफी या विवाद हिंदी रैपर, उनके साथ मैंने ट्रैक निकाले थे अभी, लाइक इसी मंथ में 2 ट्रैक्स निकाल दिए थे हमने, मतलब एक उनकी ईपी में आया था और एक सिंगल ट्रैक आया था। तो लाइक नवंबर और लाइक फ्रॉम सितंबर मतलब काफी रश हो रहा था, लाइक मेरा मतलब कंटिन्यूसली मतलब प्रोड्यूस ही कर रहा था बीट्स। तो लाइक इसी लाइक 2-3 मंथ में मैंने लाइक अराउंड 15 to 20 ट्रैक्स मतलब मैंने बना दिए थे, मतलब जो रिलीज भी हो चुके थे लाइक। Sick, man. बहुत बढ़िया भाई, सिक Hell ब्रो। yeah. Hell yeah. That's awesome. मेरा वाला बीट कब बनाना जो हमारा पेंडिंग है? यस आई रिमेम्बर। भाई मुझे मत भूल जाना, मैंने ही पहले सबसे पहले करी थी, याद रखना मेरे को। सुशांतो was the guy who मेरा started पहले हुआ asking you this, भाई। डेफिनेटली ब्रो, मतलब पहले आपका करता हूँ मैं, पहले आपका करता हूँ। रुको जरा। अच्छा मैं सबर करो, बोलना मत चाहता करो। हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ. या फरमाइए सर। मतलब काफी लोगों को ना मेरे पर्सनली मैसेजेस आते हैं एंड लोग पूछते हैं ना काफी के लिए, जब मैं और डी बीट बनाते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है। तो मतलब जो भी देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, है ना, उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक ऐसा सीन है, जब बीट पे प्रोड्यूस बाय संजय एंड डी आता है, तो इट मीन्स के मैं उसको एक सैंपल बना के देता हूँ जो मेरी वाइब होती है, या फिर जैसे चिलन वाला सीन ले सकते हैं हम, 66 का एक गाना हो गया। एंड बाय द वे 66 मेरी आने वाली एक ईपी है जो आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक डमी ट्रैक लाइक डमी बीट बनाता हूँ एंड उसको अपनी तरफ से मिक्स करता हूँ जितना मेरे से हो पाता है। एंड देन फाइनली लाइक मैं जब प्रॉपर लाइक उसको मिक्स करने के लिए मैं डी भाई के पास भेजता हूँ। देन डी भाई अपना जादू चलाते हैं, मस्त एकदम गलत मिक्स करते हैं उसे, और
और उसमें कुछ चीजें ऐसी ऐड करते हैं कि जो गलती बना देती है बीट को, समझ रहे हो? तो ये सीन है, ये मैं बताना चाहता था और अंदर Nice, nice, man. I like that. Yeah, thanks. I didn't know that also, you know. I जी didn't जी even जी know that. So जी that's sick, man. Really Yeah. cool. Thanks for sharing, man. I have a question for Shan Krozy, man. Shan Krozy, Yes, bro. I love your flow. You know, every Thanks a time you lot, bro. come, it's crazy. It's crazy flow. Thanks a lot. Tell me, when did you start, you know, rapping, and like what inspired you for this flow, for this your style? You know, what is your inspiration and stuff? You know, for मैंने ऐसे रैप करना लाइक 2014 से, मतलब लाइक मेरा पहला गाना 2014 में मैंने ड्रॉप कर दिया था, तो मेरे को इतना याद है। उससे पहले 1-2 साल पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था म्यूजिक सुनना। मैं सुनता था लाइक एमिनम, तो सबसे पहले लूंगा ही, क्योंकि सभी सुनते हैं, मैंने भी उसी को सुनना शुरू करा था क्योंकि मेरे फ्रेंड सुनते थे काफी, और उन्होंने बोला था कि ये सुन, तो उसके थ्रू मैंने काफी रैपर सुने। फिर मेरे को ना रैप करना था, पर ना मेरे को पता नहीं था मैं थोड़ा फास्ट रैप करता हूँ। मेरे को एक फ्रेंड ने बताया मेरे कि ब्रो तू ना थोड़ा अलग करता है। मैंने बोला मतलब लाइक क्या? बोला तू थोड़ा फास्ट करता है। मेरे को तो ये भी नहीं पता था उसको चॉकिंग बोलते हैं, चॉपर बोलते हैं, बस मैं करता था। देन हुआ ऐसा कि मैं उसको सुनने लग गया, ट्विस्टा, टेक 9 एंड बोन थग्स, और या तो उनको सुन के मेरे को प्रैक्टिस मिलते रही, और मैं पता नहीं मेरे को ना बस बीट के ना थोड़ा ऊपर जाके खेलने में मजा आता था, और ना थोड़ा स्पीड, मतलब लाइक मेरे को अभी भी पता है कि मैं जो बोलता हूँ लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को नहीं आता समझ, लोग बस देखते हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत चेंजेस ला रहा हूँ अपने में कि हाँ भाई अब बातें करते हैं थोड़ी, क्योंकि लोगों को पता है मैं तेज कर लेता हूँ, पर अब धीरे करके बातें बताने हैं लोगों को। तो मैं अब कहाँ थोड़ा चेंजेस लाऊंगा अपने में। यप, ये ब्रो, थैंक्स अ लॉट, मजा आया। sick, man. I like that. That's good to know, man. I can tell like from the flow that you like Twister and Bone Thugs and all them. So that makes Yeah, a bro. lot. Hell yeah. Anybody else have a question for Shan Krozy, or anybody? Like you guys have a question for each other, you can drop it, man. Think about it. Let me read some comments in the meantime. Hey dude is in the comments. He's showing a lot of emojis. Thank you. Harshal Beats. He's giving shout out to D Materials. Yeah. Hell yeah, man. And then okay, yeah. One second, man. There's so many comments I can't read. Okay, Goli, Thank you. Shan Krozy, big fan. Yeah. Akash Naskar says, I love Khatarnaak channel. UK Rappy Boy. All right, man. Thank you. Thank you guys for being here. There's at least Yeah. a few hundred people on YouTube watching us, man, at the same time. So this is fun. Yeah. Yeah. Okay, guys. So do you have any more questions? Do you have any Like, more questions to add? क्वेश्चन I से have a पहले question एक for चीज़ कहना Sanjay. चाहूंगा। I have a question for Sanjay. Go ahead. Let's hear it, man. जो ब्रो बहुत टाइम हो गया, अपना कोलैब कब आएगा? स्पेसिफिकली तेरा और मेरा। देखो ब्रो, बात ऐसी घर जैसी। ओके, आपको लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर आई आस्क्ड यू टू बी इन अ ट्रैक विद मी, व्हिच वाज योर ट्रैक? Yes. यू रिमेंबर दैट? नो, समझ रहे? तो यू ओनली डिनाइड, यू ओनली But you that only was said my track, bro. उसमें तो मैं कर ही नहीं सकता था, man. That was like kind of solo. Like nobody ever heard me like as an individual artist. So in a way, like क्योंकि तब ना मैं ही रिकॉर्ड कर रहा था, तो आई फेल्ट दैट ट्रैक एंड लाइक आई वाज लाइक मतलब उसको मैं फील कर पा रहा था, तो मेरे को लगा कि जो मेरे पास एक वर्स था वो मैं उस पर डाल सकता था, यू नो। बट सही है, करते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? yeah. Looking forward to it, man. Looking forward to it. मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर संजय। Like before asking this question, I would like to give shout out to my lil bro Focus.0 for the making a love for the Yes. street, a dope video, Obviously, man. Shout out to and the Focus D Zero. artist and the D artist for the dope beat also. और बाकी ये है कि गाना आ चुका है, जितने भी अभी देख रहे हैं तो बाद में जाके भी देख लेना, पहले लाइव देख लो। पहले live में। Like I have a question for Sanjay, like
हम दोनों ने लाइक वी मेड इट 2 ट्रैक, लाइक एक तो वो वाला बनाया था इंडियंस की बीट पे, राइट, एंड एक दूसरा ट्रैक और बनाया था चूना लाइक आसमा लाइक समथिंग, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ वो आसमा वाला मैं डाल दूं। तो मैं वो ले लेता हूँ ट्रैक, ठीक है, ये मेरा ट्रैक हो गया। नहीं मैंने वो इंडियाज गॉट टैलेंट वाला करा ना। नहीं ब्रो, मतलब हम इसे कब निकालेंगे, वैसे मैं भी ये पूछना चाहता हूँ। लेट्स सी ब्रो, मतलब देखते हैं, क्योंकि अभी मेरा वाइब थोड़ा सा चेंज हो रखा है। जो मेंटल स्टेट है मेरा अभी वो नॉर्मल हिप हॉप पे नहीं है, थोड़ा कुछ अलग हिप हॉप पे है। तो लेट्स सी, जब वहां से हम नीचे उतरेंगे तो, या फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ेंगे तो करते हैं ना आराम से। चलो सही है। Nice, man. Well, thank you guys, man. Thank you for sharing, bro. और एक क्वेश्चन मेरा एक और है, रैप इंडिया कब आओगे? ये महिला Corona के बाद, bro. Corona. Yeah, last year I was there. I had great time hanging out with you two. Yeah, man. Wanted to. I really had more plans, but then Corona came. So Yeah. let's see, man. Inshallah, man. Let's see next year. But okay, cool, man. Thank you guys for sharing, man. So the next, everybody always asks me for like cipher, in this show, in the comments, everybody's like, drop some bars, drop some bars, drop some bars. But not every rapper can drop bars, you know what I mean? But you guys can. I know this, right? I know you guys can. So today I want to make you guys rap, man. I want all of you, one after another, to really go at it. You know what I mean? Except D Materials, the producer. So it's okay. But in this segment is brought to you by Tsunami. Tsunami independence is priceless. Put that on. Love for the street, I think, is the best option. Love for the street. So this segment is brought to you by Tsunami.io. Man, I want you guys to rap, man. I really want no beats, no nothing, just a cappella. Let's start with Sanjay, then we'll do Sanjay, Sushanto, CC, Jinn, and then finally Shan Krozy is gonna kill it. Let's do it, man. Am I going first? You're going Yes, you are going first. Okay. You're going first, man. बैठा मैं यहाँ, हाथ में कलम मेरे, लिखूं दुनिया का सच, या लिखूं मैं गले का रम तेरे, या लिखूं मैं बीता वक्त बहते रक्त की बौछार में, मैं लाल पी के माल बुरे हाल, फिर भी करता मैं बवाल हूँ मैं काल तेरा, खुद को ले संभाल तू, कर गंदा न समझ के यहाँ के है कोई कमाल तू, मैं फालतू न कोई, मेरी कीमत न इस जहान तो, लेसन कुछ नया बता सबको मैं बेमिसाल हूँ, I'll never give up, I'm in hip hop forever, you just can't understand what's my flavor, cause sometimes I'm an MC, or sometimes I'm a breaker, instead of that, I'm a graffiti maker, जीऊं hip hop को मैं playboy, कर दूं destroy, तुझे मैं हूँ किसान वो जो तेरे जैसे को बोए, कहूँ दुनिया में अपनी आऊं बाहर जो मेरी पुकार होए, मैं हूँ चल, मेरे जैसा दूसरा न कोई, that's यही बात है। Sushanto. पलटवार का समय सब हो रे कमाल, बीट बजे लाउड जैसे आया हो भूचाल, सर पर सवार माया का ये कैसा जाल, लोग रहे ना संतुष्ट कुछ भी करने को तैयार, हाँ आंखें एक दूसरे की उनकी चाटे, शेयर ना किया पोस्ट होते फिर ये मेरी आंखें, I'm in come on dog, have some life, if I didn't straight up I didn't like, yeah कड़वी लग रही होंगी ये बात तुझे, पर ये है सच्चाई कोई छुपा नहीं सका इसे, अनेक है तेरे जैसे जो दबाते हैं पैर, पर छोड़ो खैर बेरा ना पटेगा क्या कि लू तेरी टैग, shout out to home is oh shit, I got fumble but I can freestyle, मेरे साथ भाई यहाँ पे रैप भाई कर रहे हैं यहाँ पे कमाल मिसाइल, क्योंकि होने वाली है ये तबाही, खतरनाक मेरे क्लैन का नाम, खतरनाक की माला मेरे गले में है, अब हम देखने लगे कौन किससे बेहतरीन, क्योंकि खतरनाक मेरा क्लैन सिटी से है दिल्ली, ये Me? yeah Yeah, okay.
Courage of fools, go make a call. Tell him I turn my blood in the pool. Tell my past I stand in the tall. Write my results and I make me cologne. Step on the hole, it's a courage of fools. Tears me to soul, it's a courage of fools. Courage of fools, go make a call. Tell her back off cause I'm in it all. I was born sick. When I was sick, doc said a girl said she won't fit in. 21 and I make my shit slit at 7. I watched a family fall apart and never turned 8. I had to grow up fast. 18 I wanted to do law, job I couldn't afford. No, septic plus to pay bills though. We would never back down. No, I call it the courage of fools, cause I believe even though that's this. So courage of fools, go make a call. Tell her the cough. Cause I'm in it all. After beefing, ask stations, they say when I give no for they wanna find me, I give them no love. Courage of fools, go make a call. Tell them I turn my blood into pool. It's a courage of fools. It's a courage of It's a fools. courage of fool. It's a courage of fool. Jinn. Let's Now hear it's it, Jinn man. turn. Yeah. Let's go, baby. 1, 2, 3. तो बहरे यो बैंक बैलेंस जीरो, बाइक मेरी हीरो, लूंगा अपनी गाड़ी तुम देखोगे फकीरो, लोडेड मेरे पास वीडियो में चले बीरोल, फालतू का ज्ञान चौदह फटे हुए निरोध, मेरी बात सुन बाप तेरा इंडस्ट्री से उठाता है फायदा, बिना मेहनत करे इन्हें मिल जाता है आयफा, फेक पूरी फेटर्निटी खाना नीति कायदा, कुछ चाटता रहेगा लौड़े कुत्ता कुछ सुनाएगा, सुनाएगा ना। टिकटॉक करने वाले बन चुके टकाटक, हिप हॉप करने वाले गाने लिखे फटाफट, फटाफट। दर्जनों पे बीट कटे सट सट सटा सट, एक पेन की नोक पे चलेगी तेरी यहाँ बगावत, बैग लेके ये गुल मेरे हाथ में था सूटकेस, लिखे इतने न्यूज पेज ढीले इनके स्क्रू पेज, तोड़ देंगे 32 बच्चा ना पाएगा टूथपेस्ट, तू लेगा मुझसे ज्ञान पढ़ने से पहले तू थोड़ी और जान डाल बेबी. Alright, so तू है झूठ मैं छुपा हुआ सच हूँ सक तू हेटर्स को ना फक तू मान मेरी रियल टॉक मैं करूँ पन्ने भरूं काफी बातों पे जो हंसा उसे मिलेगी ना माफी कभी ए मिला तुझे घंटा है लगता ये मुझे तुझे कहना मेरा बनता है डबल एक्सएल पहनू क्योंकि जमता बंदी पे नीमा पे करूँ पूरा अपना खर्चा छपा तेरे मुंह पे खुला मेरे शब्दों का जमाट है फायर फ्लो मेरा उगले क्या आग है बजे दिन रात चले बात तेरे भाई की है नाइकी से प्यार बनी एक्सडीडास है मुझे नाम है मेरे फकिंग सोल में शरीर से उसकी नी पर हैवी मेरे बोल है रहूं चिल करे ड्रिल मेरे राइम एनी टाइम हो के हाई लिखूं मैं कलम से करूं क्राइम नहीं दिल से करे रैप तेरा भाई रखे किसी का ना खौफ जाना मुझे टॉप है बेस में हिप हॉप है सुनने वाले जितने पसंद तो ना ही बहुत बेटा मेरे लिए होनी को मैं टालू फोनी के मैं गोली मारू करूं खुद कब क्या हो रहा कब काबू अभी नमी ना तू आने कभी जाने सभी साथी मेरे बड़ू आगे तेजी में ना होना मुझे स्टार You crazy, bro. You crazy right there. The crazy ass flow, man. I love that. Now demotivated. Yeah, it's too strong. Dimitri will drop a beat. No, I love this. I love this, man. Thank you guys for doing this, man. That was amazing. Sanjay is covering up his face. No, I'm not. No, it's good. It's good. Because, you know, you're in a cafe. So, you know, fuck Oh, everybody. yeah. Stay away from people, man. Okay, man. You know, this brings us, man, to the final segment of the show. This one is called Playlist Placement. So playlist placement, man. In this segment, I ask you guys, what are you listening to? You know, so I want to know what's on your playlist. What are you listening to these days? Who are your favorites? You know. So let's start. You know, let's start with Shan Krozy, man. Who's your like? Let me ask you, who is your top, artist from India? Like top rappers. Like, what's your favorite? Who are your favorite rappers from India? From India. वैसे बोलूं तो मैं ये सामने एक बंदा खड़ा हुआ है ठीक है हाँ दूसरा यार मैं अपने बंदों को ही सुनता हूँ मतलब लाइक संजय हो गया पर मैं वैसे बोलूं तो हाँ रेस्पेक्टफुली बोलूं तो मैं रागा हो गया रफ्तार भाई हो गए और मैं रफ्तार भाई को सुनता हूँ और मैं देहरादून से काफी लोगों को सुनता हूँ लाइक डिकेट शेडी यार ऐसे नाम बहुत सारे हैं मैं वैसे 5 लोग नहीं बता सकता देहरादून से हो गए अपना अनिकेत हो गया कैम ब्रो और किसका नाम ले बहुत सारे हैं ब्रो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ बट हाँ और एक बचे है ना और अपना वो रॉन्ग पास भाई ये रॉन्ग पास बड़ी हो जाता है
तो Nice. ये 5 लोग सुनता ही Nice. सुनता हूँ। Hell yeah, bro. Thank you. Yes, That's sick. Sanjay, yep, man, yep. who are you listening to lately? काफी सारे हैं, लाइक जैसे शेन ने कहा कि मतलब 5 का तो नहीं नाम ले सकते, बट No, जो no, आप just random. Just say whatever. It doesn't even have to हाँ be. Just few. भाई मतलब Yeah. तो हो गया, क्या कहते हैं, अभी डिवाइन बाबा को सुन रहा था मैं, एंड इक्का भाई जी का सुन रहा था आए एल्बम, मतलब जितना भी अभी क्या कहते हैं, रफ्तार भाई जी का सुन रहा था, अभी जो उनका ईपी आया ना, आई गेस एल्बम आया था, हाँ. आई सुना, वो सुना, पुण्य पाप सुना, एंड देन रागा ऑब्वियसली, और कौन है, और अपने भाई लोग हैं सारे, जिन हो गया, अपना पूरा क्रू हाँ. है ना, Yeah. ये हो गए, और कौन सुन रहा हूँ मैं, और कौन सुन रहा हूँ, मॉब भी हो गया, Outside of India, how about that? Like in any country, any language, any genre, Like, do you listen to anything else? और मैं सुन रहा हूँ जेजी को, जे कोल को, और केंड्रिक को भी। Aha. Makes Yes, sense. तो ये Yeah. तीन बहुत सही। I can understand. Like Yeah. from your flow, from your style, I can Yeah. understand. Yeah, Yeah. मतलब and Wu-Tang, obviously Wu-Tang Clan, Method Yeah. Man, Redman. You guys are making a Wu-Tang. Khatarnaak is like a Wu-Tang clan, man. Yeah. Desi Wu-Tang. Yeah. Let's see, man. Who wants to answer? Jinn, let's hear it, man. What are you listening to lately? Bro, Anything. like, It can be any genre, anything. like in like from India, मैं अभी सुनता हूँ जैसे like my favorite माहोमी गोली, Uh-huh. तो बहुत ही अच्छा नेपाली रैपर है, एंड यूएनबी, और देहरादून में मेरा भाई लोग द पार्कर टीम पूरी, और मॉब डी हो गया, डकेत, एंड लाइक, और साथ में एक जितने, नाम मैं लूं, हाँ पीके भाई, हाँ बीके भाई, Yeah. या बीके भाई ऑल्सो, और और बहुत ही मतलब जितने को भी मैंने नाम लिया है और जितनों का मैंने नहीं लिया है उनको भी मैं सुनता हूँ, बाकी अभी नाम याद याद नहीं नहीं आ आते रहा। जब तुम्हारे बाकी बाहर तो देखो, जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं वो तो हम सुनते ही सुनते हैं, जिनको देख के हम बड़े हुए हैं। लाइक मेरा जो मतलब मुझे पर्सनली जो मुझे पसंद है, जो मेरी 30 रुपए की सीडी के साथ आया था, वो था एकॉन, जो मेरे घर आया था पहली बार। तो लाइक जब मैंने सीडी खरीदी थी, तो एकॉन मेरे को बहुत पसंद है। बट अभी वो कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेट्स सी। और उसके बाद मुझे, और अगर मैं ओल्ड स्कूल में बात करूँ, वू-टैन हो गया, मोस डेफ हो गया, अपना डास इफेक्ट्स हो गया, और ये जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, अपना ड्रे भाई हो गए, एमिनम अपना हो गया, तो ये सारे जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, इनको मैं जरूर सुनता हूँ, और मैं आई थिंक डेली ही सुनता हूँ। जब भी मैं नहाने जाता हूँ, वॉशरूम में होता हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट चला देता हूँ, और उसके बाद उसमें बजते रहते हैं। कभी कोई मिस हो गया पार्ट तो कोई बात नहीं, दोबारा से सुन लेंगे, लेकिन वो चलते रहते हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट बन। आई थिंक नानू के पास भी है प्लेलिस्ट, नानू के पास तो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। उसमें जो हमारे इंडियन पहले जो हमारे इंडियन ओल्ड स्कूल्स ओजीज हैं पहले के, वो लोग भी इसमें मतलब इंक्लूड है। जैसे तूने सुनाया था मुझे एक गाना, उसमें था ना नानू, याद है तेरे को? कौन सा? वो अरे वो जिसमें हम नाचते थे जब तू नहा रहा था, जिसमें हम नाचते हैं बहुत ज्यादा। नहीं आ रही मुझे। अच्छा समझ गए किसकी बात हो रही अरे है। वो किसका, अद्यांत, क्या नाम है उसका? टिंगड़ंग टिंगड़ंग, अजीब सी बीट है यार। लाइक वो बहुत सुनते हैं यार, बहुत मजा आता है। बचपन में भी सुनते थे, जब हम धीरे बड़े हो रहे थे तब हमें पता नहीं था कि क्या है। अब जो गाना सुनते हैं ना, तो अब बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं कि क्या लिरिक्स है, क्या नहीं है। तो अब गाना सुनने का तरीका भी बदल गया है। पहले हम सुनते थे एज अ ऑडियंस, अब हम सुनते हैं एज अ मतलब लिसनर तो सुनते ही हैं, प्लस उसमें चीजें नोटिस करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या यूज किया है, ऐसा क्या चीज है उसमें, और ऐसी क्या बात बोली गई है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रही है। और ये गाना इतना ज्यादा ग्लोबली हिट हो गया है, जो हमें भी इम्प्रूव करने के लिए मौका देता है कि हम भी कुछ ऐसा करें लाइक दिस। Right. Yeah, no, it's important to listen to other music and learn like what made success. D Materials, I'm interested to hear, what are you listening to these days? So I from India, I listen to Ikka and Divine a lot because I like their style, the way they pen their lyrics, their style. I like dark music a lot,
So basically, Ikka and Divine are my most favorite But as a producer, Indian who do rappers. you listen to? Like, which producers do you like from anywhere? Doesn't have to be just India, but anywhere in the world. Like, which producers do? I I like Metro Boomin a lot. I'm a big fan of Metro Boomin because also if you listen to my beats, you will hear the similarity between the me and Metro Boomin. So I try to I'm inspired from his style and doing a lot of trap music just because of that. Makes sense. Makes So sense. Nice, man. yes. Hell yeah. Thank you for sharing. Sushanto, what's on your playlist lately? Yeah, What do you- like I was like, even in like when I was actually preparing for all this shit, I was hearing Ikka's new album and then previously was hearing Fateh Jyotiana track. Shout out to Fateh fuck from it. Toronto. So yeah, Fateh is in my playlist. Divine is in the playlist. Ikka Bhai is again in playlist. Raftar Bhai is there. But if particularly, ये तो इंडिया की बात हो गई. When I cross over and basically American hip hop की बात करूँ, so I have very very hard influential teachers around like KRS-One, Rakim, Nas, okay, whole Boogie Down production, and then it's a BDP, BDP in short. Uh, b- Duck Down Productions, Buckshot, OGC Original Gun Clappers, and there are certain people, and yes, Master Ace. How can I forget them too? Marco Polo, like they are the sickest one around. और उनके lyricism और उनकी beat, that truly true school artist. और मेरा हमेशा heavily influence रहा है East Coast, West Coast दोनों से, क्योंकि being a dancer, like मैं popping भी करता हूँ, तो my style is basically originated from West Coast of America. California, Fresno, all of these places. So I have this very heavy sound of laid back music, G style music, but in the same time, I love that energetic vibe and basically kind of music that Africa Bambata gave, kind of Grand Cuba gave, kind of Pete Rock and CL Smooth gave. तो मेरा एक इन्फ्लुएंशियल है काफी हद तक हिप हॉप को, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था जैम में, तो इट वाज मोर अबाउट इन जैम्स ब्रेक बीट्स, बी बॉय यूज्ड टू make moves on those certain beats, and I was heavily influenced by all of them, and those music were all around in subconscious mind. तब तो हम 2010 में थे, तो we hardly used to give what exactly this music is, but later on when we discovered this music is something that was touching. जब बाद में उनके lyrics समझ आए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, what actually the message they are putting in those music and those rap, that made sense to me. And afterward that, it's still the same. Sanjay makes those super crisp, clear hip hop hard ass music in Delhi prominently. Like मैं उसको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, like बहुत sick beats प्रोड्यूस करता है वो. Now is into trap and discovering himself as more different multi what's say multi I'm not getting that word, but he's trying different layers in him, but he has this heavy influence of being into that area called hip hop, and then fusing that element and becoming a part and making a different genre out of it. तो yes, ये थोड़ा मैंने एक राउंड ऑफ सर्कल घुमा के 360 कर दिया, but I've been raised into heavily East Coast and West Coast, both of the music. साउथ के भी रैपर्स हैं, खासकर चिंगी is one of the favorite rappers right now. His track Bag Up is one of the hottest track that I've been bumping to right now. Like I've started hearing it from May, and like it's still number one in my Spotify playlist. Yeah. Nice. Man, do you listen to any Bangla rappers? Yes, it's CZ. I love CZ a lot. Like I've been following CZ. I've been following CZ from 2015. The first Kolkata rap cipher which came, that was A-list. And from I also saw that Bangladeshi rappers, but I don't remember. I only remember one of their name, Nizam Rabi, right? Nizam Rabi, So, yeah. Fire, yes. fire. So I heard him, and his flow is like super smooth, super smooth, man. Like I was like, fuck, this dude can really kill in Bangla, man. Crazy, yeah. Yeah, man. Yeah, maybe since I'm Bengali, I'm just gonna plug this. I'm gonna say like, check out, like, if anybody's interested in Bangla hip hop, check out Black Zang, Nizam Rabi, Jalali Set, Bhanga Bangla, if you want something different. So yeah, but there's a lot more, man. That's amazing. Thank you for sharing. Cici, what's on your playlist, man? Let's hear it.
Yeah, I listen to kind of like all kind of music, Uh-huh. except for metal and yeah, except for metal. um, so since I sing as well, I listen to a lot of sad songs too, and I sing a lot of sad songs as well. But my go-to song of my all-time go-to song is 1985 by J. Cole. Uh-huh. And about the artists I listen from India would be Raga Bhai and all, of course, all of Khatarnaak and MC Heem, Gully Gang, Full Power, Mm. Nice. Rebel 7. Yeah. You got a nice list. Nice list over there, man. I like that. Well, that's awesome. Thank you guys, man. I appreciate you guys. You guys are really, true to hip hop. I feel like all of you guys are really inspired by hip hop, and you try to live that hip hop life, and you really try to, be truthful from your heart. You tell stories of your, of your city, of your friends, of your families. In all your music, you guys always try to bring that reality into it. So I appreciate you, man. Thank you, guys. Shout out to Sanjay's dog. That's not it though. Yes. But thank you guys for joining us here today, man. Is there any one last message that you got? Anybody wants to give before we leave? Shout Sushanto. out to DJ Raf for holding this down for Khatarnaak Hip Hop Yeah, bro. Collective, man. Jai, Jai, bro. Shout out to DJ Raf, shout out to Desi Hip Hop, shout out to Thank you. Sunumi.io for and holding this down, man. Hell yeah. एक और चीज जो भी देख रहा है, जो म्यूजिक स्टार्ट करना चाहता है या फिर कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो कीप डूइंग योर थिंग ब्रो. लाइक प्रैक्टिस मेक्स मैन नॉट परफेक्ट बट बेटर. समझ रहे हो? वो बेटरमेंट होते होते एक टाइम पे तुम ऐसे हो जाओगे कि तुम्हें किसी को टेक्स्ट करने की कोशिश मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप उभरते रहोगे तुम लोग. तो दैट्स द मैसेज. Nice. Hell yeah. मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगा लास्ट में. ये लास्ट है, लाइक पहले तो मुझे बता दो, एंड है ये पूरे सीजन का. अबे यार मेरा तो हो गया. बाकी बहुत डोप मजा आया. एंड बिग शाउट आउट टू रैप भाई कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया. थैंक यू सो मच ब्रो कि पूरे खतरनाक टीम को यहाँ पे दिया. एंड भाई जितने भी लोग सुनते हैं खतरनाक को सुनते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जितने भी ट्रू हिप हॉप लवर हैं, जितने भी लोग सुनते हैं, तो अगर वो खतरनाक को नहीं जानते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. तो सबसे पहले आप जाओ खतरनाक सुनो, और अगर असली हिप हॉप अगर दिल में अगर जिंदा है तो आपको पता चल जाएगा हम लोग क्या चीज है. और बिग शाउट आउट टू एवरीवन जो भी हमें देख रहा है, जो भी हमें रियल सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम डे वन, तो उसके लिए पूरे दिल से फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट की शाउट आउट है. और बाकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है भाई लोगों, प्रॉब्लम्स के आगे रुकना नहीं है. और ये जो अभी टाइम चल रहा है, मैं जानता हूँ ये आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल टाइम है रैप, क्योंकि जो 2020 है इसमें पूरा मार्केट ही खत्म कर दिया है. सो मैं इससे बहुत रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज हम लोगों का ये जीने का एक जरिया है, क्योंकि हम इससे अर्न भी करते हैं, और हम इससे नॉलेज तो हम देते ही देते हैं, साथ में अर्न भी करते हैं. तो अभी बहुत सारी चीजें डाउन है, बट अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको डाउन मत होने देना. ये जितनी भी चीजें आ रही हैं वो एक टाइम तक है, और इसके बाद सीन सॉर्टेड हो जाएगा. क्योंकि बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम्स गॉड क्रिएट खुद करता है, ताकि आप उसको पार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो आपको देखना चाहता है. सो जस्ट लाइक दिस, ये भी प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हो रही है बाय द गॉड, और ये हम सबके लिए लाइक पूरा ग्लोबली ये चैलेंज है कि हम इसको कैसे सर्वाइव करते हैं. और बिल्कुल हम इसे सर्वाइव करेंगे विद द हिप हॉप, और जो भी हमारे जीवन में है लाइक सबके साथ जाएंगे आगे, और इस पूरे मकाम को पाएंगे. ये रैप हिप हॉप बड़े. Love that, man. Thank you. That well said. Very well said, bro. I love that. These are all challenges. God is, testing us with some challenges, Yeah. some problem, but globally together as humanity, we can rise up and win. Yeah, bro. There's no doubt, man. I love that. Yeah, bro. All right, guys. Thank you so much for joining, man. I really appreciate you. I will talk to you guys soon. Hit you up on WhatsApp.
Yeah. And thank you very much, man. Peace, man. Peace. Peace out, man. Bye-bye. What up, yo? Desi Hip Hop General. Check. Unfiltered. Con artist. New York City. Yo, we ain't cloud chasing. We about facing the devil. You about hating. We about raising up people levels. Ain't no doubt, Masons. I'm building upward. You seeking trouble. I'm now waiting, caught in the matrix, but keep my hustle. The devil whisper, but I come mentally with the muscle. When the rebels spitting sinkers, it's all